We will write an. The last word is X-ray. X-ray. An X-ray. An X-ray. Right? Yes, ma'am. Let's see some examples, some more examples. For example, if I'm writing King Arthur was dash just king. What we will write over here? King Arthur was just king. King Just, Arthur was a just king. yes. A We are just using king. a. Yes. But it's the same way if I'm writing Sheldon is dash honest person. Honest man. Sheldon is dash honest man. Oh. And Sheldon honest. is an honest man. And why we're using and? Because the word honest, the sound is Sound is vowel. O. The sound of H is vowel over here. Honest. H sound is there is no sound of H. We will write an because the sound is O. Honest. Let's take some more examples like this. Same way if I'm writing no, there is no vowel in this sentence. Okay, now we will discuss about the. Where we use the. A and an is clear to you? Yes, ma'am. Okay, now we will discuss about the. For the, there are some rules where we're not using the and where we're using the. Right? First of all, language. If I'm Yes. talking about any language, either it's any language, English, Hindi, any, Punjabi, any language. The We are language. not using the with any language. We are not using any the with language. I'm not saying I am teaching the English. I'm just saying I'm teaching English. I speak in English. I'm not saying I speak in the English. No, we are not using the with any language. किसी भी लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं करना. आइदर कोई भी सेंटेंस हो उसको द में द का इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज से पहले द हमने नहीं यूज करना. We are not using the before any language. Right? Okay. Yes, ma'am. If I'm writing about a status of job, for example, if someone saying he is the pilot, am I saying the pilot? No. It's he is a pilot. He's a pilot. We are using a for that. A or an, whatever the situation is. For example, he is an engineer. I'm saying an engineer because he is a vowel. We are using a or an instead of the. Either there is a pilot, either there is a salesman, either he's an engineer, either he's a doctor. We are using a or an, not the. We are not using the with any job status. Okay. One more thing. If we are talking about any meals, either it's breakfast, either it's lunch, either it's dinner. I'm not saying I like the breakfast. I like breakfast. I like eating breakfast. We are not using the with that. Yes. Even uncountable nouns. For example,
pasta. She cooked pasta. General, it's a general sentence. We are not using she cooked the pasta. Yes. We are not using the with uncountable nouns. There are some, these are basic rules. For that, where we use the and where we are not using the. For example, if I'm saying, okay, one more thing, very interesting thing. You are no, maybe you don't know about that. So many people do this type of mistake every time. Okay, when we're talking about India, we have to use the India. Are we using the India? No. No. But for USA, we are using the USA, the UAE, the UK. Yes, ma'am. Why? You know the reason behind that? We always write the USA, the UK, the UAE. But we are not using the before India, either it's Spain, any other country. Any other country, we are not using the. We are using the only with the USA, UK, and UAE. Because they are the combination of many countries. United States of America. There are so many states there. UAE. We are not using. We are using the with that because they are the combination of so many states or countries. So that's why we are using the before that. India, Spain, France, England, any country you can take. We are not using the before that. Okay. Even if we are talking about planets, if we are talking about planets are only one. Each planet, हर ग्रह एक ही है, धरती भी एक है, मार्स भी एक है. Every planet is one. For we are using the moon, the earth, the sun. जो चीज एक है, उसको उसके साथ we always use the. For example, the earth, the moon, internet. Internet एक ही है. We using the internet. Right? Yes, ma'am. काउंटेबल नाउन में द आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में. Yes. For example, uncountable noun के साथ the uncountable noun के साथ नहीं आना the. She cooked pasta. It's a general sentence. She cooked pasta. It's a general sentence. We are not using the before that. But if I'm saying, if I'm using the word, if I'm saying, I like the dinner specifically pasta, then we are using the pasta because it's a specific thing. It's a specific thing that we are using the pasta. जब किसी चीज को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं डिनर में जा रही हूँ, बट स्पेसिफिकली आई ईट पिज्जा ओवर हियर. आई ईट द पिज्जा. मैं वहां पे जाके पिज्जा ही खाऊंगी, मैंने और कुछ नहीं खाना, मैंने सिर्फ पिज्जा ही खाना है. मैंने जब स्पेसिफाई कर दिया किसी चीज को, देन वी आर यूजिंग द फॉर दैट. ओके. ओके, लेकिन ये कंट्री के पहले तो ये तो स्पेसिफाई नहीं हो रही है ना मैम. नो 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 नो. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. वेट. The sentence is, the team organize dash friendly match
with dash president of both dash countries. Here, the first, there are three sentences in one single, there are three blanks in one single sentence, right? The team organized a friendly match. The एक friendly team match वो organize कर रहे हैं with dash president, with the president of both countries. We are talking, when we're talking about more than two things, I told you, we have to write the. We use a and an for one thing, right? Yes. They are not specify the country name, so we are not writing the, right? Yes. Let's take some more example like this. It will be more clear to you. If I'm saying dash history professor, we have mentioned here the specifically professor. कौन से professor की बात हो रही है? हमने mention कर दिया, specify कर दिया. हमने specify कर दिया the history professor, because हमने specify कर दिया कि हम इस specify इस special subject के professor की बात कर रहे हैं. That, so we will use the for that. Okay. Same way, if I'm saying dash oranges, I bought are very sure. जो ऑरेंजेस मैंने खरीदे थे वो खट्टे निकले. हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो ऑरेंजेस आई बॉट ऑरेंजेस, आई बॉट एन ऑरेंजेस. द सेंटेंस इज लाइक दैट. इफ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने जो वो वाले ऑरेंजेस खरीदे थे वो खट्टे निकले, देन वी विल राइट द ऑरेंजेस. जो हमने वो ऑरेंजेस खरीदे थे वो खट्टे निकले. हमने स्पेसिफाई जो कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया वो द होगा. द होगा क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया ना, हमने उसको स्पेशल बना दिया. ऑरेंजेस आर ऑरेंजेस. जब हमने उनको स्पेशल बना दिया, उन सब में से जो वो वाले खरीदे थे मैंने, वो ऑरेंजेस खट्टे निकले. I hope it's clear to you. Yes, ma'am. Right? Same way, the sentence is, let's take one more sentence of the. Sharon will take dash train from dash next stop. शेरन ने अगले स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप में से एक और ट्रेन लेनी है. शी विल टेक अ ट्रेन फ्रॉम डैश नेक्स्ट स्टॉप. जो नेक्स्ट स्टॉप है जाएगा, जो नेक्स्ट स्टॉप, बिकॉज हमने मेंशन कर दिया कहां से उसने ट्रेन लेनी है. क्योंकि हमने मेंशन कर दिया नेक्स्ट स्टॉप. नेक्स्ट ये हमने मेंशन कर दिया कि कौन से स्टॉपेज में से उसने अगली ट्रेन लेनी है. हमने स्पेसिफाई कर दिया. ट्रेन इज, वी आर यूजिंग, नॉट यूजिंग द ट्रेन, वी आर यूजिंग अ ट्रेन, राइट? वी आर यूजिंग अ ट्रेन, राइट? बट जब हमने स्पेसिफाई कर दिया हमने वो ट्रेन अगले स्टॉपेज से लेनी है, देन वी विल यूज द, राइट? यस मैम. जो चीज का हम स्पेसिफिक कर देते हैं वो उसके आगे द बैठेगा. तो बैठेगा. यस. अभी देखो एक और सेंटेंस मैं लिख रही हूँ अभी. डैश फेमस
poem. अभी डैश फेमस, अब मैंने इनकम्प्लीट रखा है सेंटेंस, देखो पहले द डैश फेमस पोइम, अ फेमस पोइम, जो हमने पोइम का नेम तो स्पेसिफाई किया ही नहीं अभी तक। अगर मैं पोइम का नेम स्पेसिफाई कर देती हूँ, द फेमस पोइम ऑडी टू अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल is written by dash poet John Keats. Now the famous poem, अभी हमने पोइम का नेम मेंशन कर दिया, द ऑडी अ नाइटिंगेल, we will write the famous poem Ode to Nightingale is written by the poet, हमने पोइट का भी नेम मेंशन कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया पोइट का भी नेम, देन अगेन वी वर यूजिंग द पोइट जॉन केट्स, कि ये वाली पोइम द जॉन केट्स ने लिखी है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। इफ आई एम सेइंग आई लाइक द फेमस पोइम, आई लाइक अ फेमस पोइम, कोई भी पोइम हो सकती है। जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाली पोइम मुझे बहुत अच्छी लगती है जो जॉन केट्स ने लिखी थी, हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कौन से पोइट ने लिखी थी, देन वी विल यूज द इन बोथ केसेस। Yes, ma'am. ओके गौरी, Yes. आई होप एन एंड द का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा आपको, वेयर वी यूज वेयर वी यूज एन एंड वेयर वी यूज द। Yes, ma'am. Okay, you have to practice this at home. If you have any doubt, you can ask me in tomorrow session. Okay, ma'am. Okay, because abhi time over ho gaya hai. We will discuss next topic in the next in tomorrow session. Okay. Okay, ma'am. So I hope आपका बेटा है घर पे, आपने बोला आपका 5 year का बेटा है, right? You have to speak बेटी. some little words, some small words with him. छोटे छोटे sentences उसके साथ इंग्लिश में बोलो घर पे, उसका भी इम्प्रूव होगा, आपका भी इम्प्रूव होगा, आप दोनों की प्रैक्टिस होगी। ओके गौरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, ma'am. तो आप भी उन वर्ड्स को यूज करो, उसको भी करवाओ, क्योंकि उसकी भी इम्प्रूव होगी आपको देख के, आप बोलोगे ना वो भी इम्प्रूव करेगा अपने भी, ठीक है? आप बोलोगे वो अपने आप आपको रिप्लाई करेगा इंग्लिश में फिर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक for the Okay, next ma'am. session. Okay, Okay, ma'am. so you have to use, always remember while speaking you have to conversate in English with your son. थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा उसके साथ बोलना स्टार्ट करो, ठीक है? Okay, Son see you नहीं, in the next daughter. session then. Oh, daughter, sorry. Sorry, either, okay, you have to speak in English with your daughter. Okay, छोटे छोटे sentences शायद Okay, शुरू ma'am. करो उसके साथ। Okay. Okay, okay, bye, see you tomorrow. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Bye.